Hello everyone, I am Farhana Ahmed from GG Sarda Higher English School, which is one of the unit of Adarsh Vidya Mandir. Students, today we will learn about menstrual cycle. This is the definition of menstrual cycle. You can see here the process of building and shedding of uterine lining in a cyclical form is known as menstrual cycle. Now, what do you mean by building and shedding? Building means formation, okay, building means formation and shedding means breakdown. Now what is breakdown and forming? Uterine lining is a membrane which also called as endometrium layer, which is formed in the uterus. Endometrium layer is formed with the help of connective tissues and blood vessel, also called as uterine lining, that endometrium layer. Okay, we can see here we can called as endometrium as well as uterine lining. Okay, this endometrium layer form and break down in the female reproductive system, in the uterus of female reproductive system actually, in a cyclical form. That process is known as menstrual cycle. Now before going in detail of about the process of menstrual cycle, first we have to understand the female reproductive organs. Okay, the organs of female reproductive system, because the process of menstrual cycle occurs in female reproductive system. So let's have a quick recap of female reproductive system. You can see here, this is the diagram of female reproductive system. This is a pair of ovaries. Okay, the pair of ovaries present on either side of the uterus. This following these pair of ovaries, a pair of fallopian tubes are there. Okay, now what is the function of this ovary? The function of the ovaries is development and production of eggs. That process of development and production of eggs is called as oogenesis. Okay, so the process of oogenesis occur in female in ovaries. Following these ovaries is fallopian tube. The other name of fallopian tube is oviduct. Now what is the function of these fallopian tube? When the egg developed in the ovaries after rupturing or after ovulation, that means after the release of the egg, and when it comes into the fallopian tube, the process of fertilization and or we can say the process of fusion of male and female gamete, that means the sperm and egg will fuse in this fallopian tube. But this is also the finger like structure. You can see here the finger like structure we can call as fimbriae. Now the fimbriae is helpful in picking the egg. When the egg rupture from the ovary, the fimbriae picks up and it helps to transfer this egg from the fallopian tube. Okay, so this is the function of fimbriae. Now following these fallopian tube, okay, this is fallopian tube and we may call it as oviduct. Following these fallopian tube, a sac like structure, this is the sac like structure which is present in the middle of the ovary and fallopian tube, we can call it as uterus. Uterus is a very important organ because development and growth of an embryo occur in the uterus, as well as the endometrium layer. You can see here the endometrium layer formed on the uterus, and this uterus opens to the cervix. Cervix is also called as the mouth of the uterus. Okay, and the cervix leads to the tubular passage called as vagina. So all these are the organs of female reproductive system. Now we have completed female reproductive system. Now let's move to the function of female reproductive system. Functions of female reproductive system. Okay, the first function of female reproductive system is production of eggs. Okay, now where the production of eggs occur? In the ovaries. Okay, the follicle developed and produced in the ovaries, that process which we called
which we can called as oogenesis. Okay, the process of production of eggs is called as oogenesis. And the second function is it support the growth and development of an embryo. When the egg rupture from the ovary and when it comes into the fallopian tube with the help of fimbriae, if any sperm is present there, it can fuse with the egg and fertilization occur. After fertilization, the zygote will develop in the fallopian tube, and it also developed in a stage called blastocyst. After that, that embryo will come into the uterus, and the endometrium layer provide the embryo nutrition and nutrients for the further growth and development of the fetus. So these are the two functions of female reproductive system. Now let's move to the menstrual cycle. Menstrual cycle occurs at the regular interval of 28 days. Okay, now there are so many female in which the menstrual cycle may be 29 days or 30 days or 35 minutes. It may varies, but the normal range of menstrual cycle is 28 to 30 days. Okay, now the next point, it start at the age of puberty. What is the age of puberty? 11 to 13 years. In female, the menstrual cycle start at the age of puberty from 11 to 13 years, and it ends at the age of menopause. What is the age of menopause? 45 to 30 years. And what is the meaning of menopause? When the menstrual cycle, that cyclical process will ends up, that process is known as menopause, and the age of menopause is 45 to 50 years. Phases of menstrual cycle. There are 4 phases of menstrual cycle: menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase, and luteal phase. Menstrual phase start from the first day of the cycle till 5th day of the cycle. In this phase, the endometrium layer which is forming in the uterus will shades off. That means it will break from the uterus. And the second phase is follicular phase. It starts from the 5th day of the menstrual cycle till 13th. It may be from 12th day till 13th day, or maybe 12th day. Okay, in this phase the development of the follicle will occur, and also the formation of or the building of endometrium will going to start in the 5th day of follicular phase. Now the third phase is ovulatory phase. Ovulatory phase, in this phase ovulation will occur. That means the egg will release from the ovary and it will comes into the fallopian tube. That process is known as ovulation phase, and due to ovulation, this phase is known as ovulatory phase. It may be from 14th to 15th day, or in some cases it may be on 16th day. It depends on the days of the cycle. If the cycle is of 28 days, the ovulation will occur on the 14th in between 14th to 15th day. Now the last phase is luteal phase. In the luteal phase, maintenance of endometrium will occur, or a hormone release from the corpus luteum. We will see it later. Corpus luteum, the hormone called as progesterone. Due to that hormone, the thickening of the endometrium will maintain in this phase. This phase will start from the 15th day of the cycle till 20 to 21, 22 days of the cycle. So we have completed the 4 phases of menstrual cycle. Now let's move to the graphical representation and the hormonal level of the menstrual cycle. Now there are 4 hormones which is involved in menstrual cycle. These are the 4 hormones. The first one is follicle stimulating hormone, or we can also called as FSH. Okay, it helps in the development of the follicle in the ovaries. The second hormone is estrogen. It helps in the development of endometrium layer in the uterus. The third hormone is progesterone hormone.
Progesterone helps in the maintenance and of the thickening of the endometrium layer. And the fourth hormone is luteinizing hormone. It helps in the ovulation, the process where the egg releases from the ovary and comes into the fallopian tube. That process is known as ovulation, and for the process of ovulation, the hormone luteinizing, LH we can call it as luteinizing hormone, support for the ovulation. Now this is the graphical representation of menstrual cycle. The hypothalamus, okay, the hypothalamus, which is present in the undersurface of the brain above the pituitary gland and below the thalamus. Okay, that hypothalamus will secrete an hormone that is called as GnRH, or gonadotropic releasing hormone. Okay, this hormone is secreted by hypothalamus. When it secretes and comes into the blood vessel, it stimulates the anterpituitary gland. Okay, it stimulates the anterpituitary gland. Stimulate means alert. It stimulate or alert the anterpituitary gland to secrete FSH. Okay, after that, when the FSH will secrete, what happens? FSH means follicle stimulating hormone. When it secrete from the anterpituitary gland, it helps in the development of a dominant follicle. There are so many follicle or eggs, follicle which is present in the ovaries. One of the dominant follicle is going to develop in the ovary. So due to this hormone, the follicle will develop, one of the dominant follicle will going to develop, by which hormone? Due to the FSH hormone. That developing follicle will secrete a hormone called as estrogen. Okay, this developing follicle will secrete an hormone called as estrogen. You can see here, this is the follicle, or follicle means, what do you mean by follicle? Follicle means a membrane like structure which is present on the outer side of an egg. An egg is present in the follicle, in the liquid like secretion. That membrane like structure is called as follicle. So how this follicle is developing? Due to the hormone FSH. अब यहाँ पर जो FSH हार्मोन है ये डेवलप करता है एग को, जो कि ओवरी में डेवलप हो रहे हैं, और वही डेवलपिंग हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को. तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है कि जो यूटरस है उसमें एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्म होना स्टार्ट होती है 5th, इट मे बी 6th डे और मे बी 5th डे. फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट डे टू 5th डे है, ये अभी ये यहाँ पर जो है मेंस्ट्रुअल फेज इसे कहा गया है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो ब्रेक डाउन होती है. ओके, बट वी आर going to learn about follicular phase because the follicle is going to develop in this phase. Therefore we are going to start from the 6th day, that means the follicular phase. तो इस फेज में फॉलिकल डेवलप हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 6th डे टू 13th डे एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है. यहाँ से हम देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 6th डे से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पर कंप्लीटली थिक हो गई है ऑन द 13th डे. इट मे बी ऑन द 13th डे इट मे बी 30 mm और 18 mm और 19 mm. ओके, इन अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब यहाँ पर 13th डे तक एंडोमेट्रियम लेयर जो है फॉर्म हो गई है. उसके बाद हाइपोथैलेमस जो कि which is secreting gonadotropic releasing hormone, the level of gonadotropic releasing hormone will high,
and due to that a luteinizing hormone will secrete from the anterior pituitary gland because the hypothalamus gland which is secreting GnRH will stimulate the anterior pituitary gland to secrete the LH hormone. तो इस LH hormone की वजह से क्या हो रहा है कि ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन कैसे? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो गया है और एंडोमेट्रियम लेयर भी फॉर्म हो गई है. तो ये जो फॉलिकल है जो डेवलप्ड हो गया है 13th डे पर, तो ये फॉलिकल से एग जो है रप्चर होके बाहर आ जाएगा और यही फॉलिकल की मेम्ब्रेन क्या बन जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है. ओके, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है और एग जो है ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है. तो वो जो प्रोसेस है ओवरी से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आया, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन कहते हैं और वो फेज को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं. अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि फॉलिकल से बना हुआ है, फॉलिकल की मेम्ब्रेन से बना हुआ है, वो फॉलिकल क्या सिक्रीट करता है? वो क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम. और वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है. अब व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्म हुई है ऑन द 13th डे, तो इस लेयर का मेंटेन होना जरूरी है क्योंकि इफ एनी जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में आया है, अगर वो किसी स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो. तो वो एम्ब्रियो को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए. तो वो एंडोमेट्रियम लेयर में आकर इम्प्लांट करेगा. तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम लेयर का थिक होना, मेंटेन होना ज़रूरी है. तो उसे थिकनेस को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है. इसी वजह से यहाँ पर ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे मेंटेनेंस है लेयर का, एंडोमेट्रियम लेयर का. अब इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज. क्यों ल्यूटियल फेज कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है हाई है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से. सो दिस ड्यू टू दिस वर्ड ल्यूटियम वर्ड की वजह से यहाँ पे ये फोर्थ फेज का नाम दिया हुआ है, दैट इज ल्यूटियल फेज. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो एग रप्चर होके फैलोपियन ट्यूब में आ गया है वो वेट करता है 24 to 30 आवर्स. किसके लिए? कोई अगर स्पर्म वहाँ पर प्रेजेंट होता है या फ्यूज होने के लिए. बट अगर इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म द एग विल गो इन द डीके प्रोसेस. तो अगर कोई स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं होता है तो वो एग जो रहेगा, जो रप्चर हुआ था, वो डीके होना स्टार्ट होगा. तो वहां पर अगर डीके होना स्टार्ट होगा और अगर किसी से कोई स्पर्म से फ्यूजन ही नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम लेयर का कोई वहां पे यूज नहीं है. तो एंडोमेट्रियम लेयर का क्या होगा? तो 24 to 30 आवर्स के बाद क्या होगा? वो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिगन में कन्वर्ट हो जाएगा. और जैसे ही कॉर्पस एल्बिगन में कन्वर्ट होगा 24 to 30 आवर्स के बाद, तो ये जो लेवल है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जिसने मेंटेन करके रखा है एंडोमेट्रियम लेयर को, वो लेवल डाउन हो जाएगा. और लेवल जैसे ही डाउन होना स्टार्ट होगा 18-19 डे पर लेवल अगर डाउन होना स्टार्ट होता है या 16-17 पर, तो एंडोमेट्रियम लेयर क्या होगी? बनना जो थिकनेस है वो कम होने लगेगी और फिर ऑन दी 28th डे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कंप्लीटली स्टॉप होने की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगी. तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज. ओके, मेंस्ट्रुअल फेज व्हाट occur in menstrual phase? The process where the blood vessels and connective tissue will come out from the vagina. That process is known as menstrual phase. तो वापस से 28th डे के बाद मेंस्ट्रुअल फेज जो है स्टार्ट होगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा था. मैंने स्टार्टिंग में ये 1st to 5th डे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम एस्ट्रोजन हार्मोन को देखकर पढ़ रहे थे. तो एस्ट्रोजन हार्मोन का क्योंकि रोल होता है एंडोमेट्रियम को फॉर्म करना, तो वो हो रहा है यहाँ से 5th to 6th डे से. और अभी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है? 1st to 5th डे पर एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन हो रही है. क्योंकि हम बिल्डिंग पढ़ रहे थे एंडोमेट्रियम की, इसीलिए मैंने फॉलिक्यूलर फेज से स्टार्ट किया था. तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड
that 4 phases, that is luteal phase and ovulatory phase, follicular phase. So students, we have completed the topic. If you have any difficulty, please ask me in the comment section. So comment section box. So thank you students, have a nice day, goodbye.